Okay, so we are live on YouTube. We have a backup, and let's just start recording this meeting. Yes. Hmm. Yeah. Good So evening. let's. How are you? Yeah. Good evening. I want to start this session by saying, a ritual है Ganpati Bappa Moria, and let's start again. So yeah, there was no plan actually to take classes this weekend, as we are reevaluating this program, um, to understand and to make it more better, to understand how many people are actually getting benefit from these classes, because it takes a lot of time to prepare this content. And we actually wanted to understand if this is beginner friendly, since we had like 7 to 8 classes so far. And if you are understanding the concepts, or do you need anything improvement in the content or the teaching style, just be honest and let us know so that we can improve on. At the end, it's important for us to make sure that our students and learners are understanding the concepts and they are getting benefit from this. ठीक है ना? तो आप अगर कुछ फीडबैक दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा, एंड वी आर रेडी टू टेक दैट फीडबैक एंड वर्क ऑन इट. सो नो, विल नॉट से कि ओके ऐसे आपने क्यों बोला. जो भी है बता दो, एंड वी आर रेडी टू वर्क ऑन इट. It may be related to class timings as well. If you are if you feel like this is not a correct timing for a class, then just let us know. We'll try to manage, because as a working professional, this is a perfect time which we found कि, okay, people can come and learn during this time. Yeah. If it is related to language, अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा है, आपको हिंदी हिंदी ज़्यादा चाहिए, इंग्लिश कम कम ऐसे कुछ है, then also let me know. We can work on it. And the content as well. आपको लग रहा है if the content is very high level, हमें और drill down करना चाहिए, then yeah, वो भी बता दो. Moderators, I saw one message in a group. Uh, People were saying moderators are not active, but moderators are in different time zone. I would like to take the opportunity and say thanks to them, especially Mehdi. He's in different time zone. Still, you will see he is very active and replying to all of the messages in a group. So yeah, just I can't blame them, or I can't say them you, because I'm not giving any salary. This is complete free and community work. Even if you are interested to do volunteering work or moderating work, let me know. And Sir, this is can a I? community. We have to uh, help ourselves and help each other, right? Yeah. Your my series is free, and that is a problem. अब उसमें क्या कर सकते हैं? फ्री का कंटेंट लोग ज्यादा देखते नहीं है. We had this discussion a lot कि इसको कुछ चार्ज वगैरह करना चाहिए क्या. When we charge a small fee, then people start appearing in the classes. So थोड़ा उनको realize होता है that we have made some investment, तो फिर um, हमें क्लास अटेंड करना पड़ेगा रेगुलरली. But no, uh, the start or the vision we had, this has to be free. जितने भी लोग आते हैं 10-20, we are going to continue this series for them and for free. um, yeah, we can't help with that. We can't start charging. It will be very wrong for because in this beginning only we said this is going to be free. YouTube link, okay, our channel. जब भी टाइम मिले तो यूट्यूब
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड यू कैन वॉच ऑल प्रीवियस वीडियोस ऑन यूट्यूब। यहाँ पे सब कुछ है फ्री। हाँ, तो इसको चार्ज तो नहीं करेंगे डेफिनेटली, जितने भी लोग हैं उससे कंटिन्यू करेंगे। So this re-evaluation is not for it's not demotivation. हमें we are demotivated. Why people are not appearing? Um, it is just to re-evaluate the program and to understand how we can help more people, है ना? Okay. And कुछ भी आपको सजेशन है, लेट अस नो। हमने एक फॉर्म लिंक शेयर किया है इसकी। Some videos are not running on graphy.com, because we are taking this live classes na. So so those live classes recordings I'll need to upload. I'll do it. एक live class recording missing है, but yes, I'll do it. Yeah, we are going to finish it. No worries on that. Okay, thank you guys for waiting. It was my browser issue. I don't know. Unresponsive बता रहा था, because maybe because I was scrolling through chat. हाँ, but it is resolved.
I stopped my video and let's continue. Okay. Huh. So today's topic, we are going to continue with our deployment series. So deployment section. So, and let's see how much we can cover today. I'll share my screen. Okay. So yesterday session was good. Yes, I also enjoyed it because yesterday we discussed 10 different problems related to CKD. We covered few practice questions for the CKD exam, and there we covered a lot of things: pod deployments, how to roll back deployments, replica set, right? Persistent volumes. So it was quick revision on the previous topics: multi-container pods. Then we also saw the jobs and the cron jobs, right? If you were not there in the last session, just I'll request you to check out previous session videos. We so far we had like 7 sessions, and if you face any difficulty to understand any concept from a previous session, just let us know. We'll try to have extra sessions on that. Mm. But just don't give up so easily on the Kubernetes. It's as you know, it's a mandatory skill for a DevOps engineer or a SRE engineer, and you will find a lot of jobs for a Kubernetes technology, right, in our industry. And if you do the certification, Kubernetes certifications, which are practical certifications, you'll get more calls, interview calls. आपको बहुत ज़्यादा आएंगे. Yeah. So far, we have covered cluster namespaces, cluster configuration, pods, deployments, replica sets. So we know how to go create a pod. Commands हमने बहुत बार run किए. We have also seen the YAML files for the pod. तो pod का ये कुछ sample ऐसे दिख रहा है आपको YAML file. And we also saw the YAML files for the um, jobs, cron jobs, persistent volume claims, and also the deployment, right? Deployment का YAML file ऐसे कुछ दिखता है आपको. This is my deployment file. Okay, Nginx container. This is deployment file जहाँ पे we can specify the definition for a deployment. Kind is a deployment. Metadata में you can specify the name for your deployment and the namespace. After that, we can specify the replica count and also the selectors. Selector वाला part जो है ना आज बहुत आपको clear हो जाएगा because we are going to see the canary and the blue green deployment today. Okay, so उस case में आपको clear हो जाएगा how why do we need these labels and the selector match labels. And if you notice this part, ठीक है ना, ये template में जो section है, this is same as the pod का जो YAML file था. So this metadata is for your pod, and this section is same as the container. If we compare it here with the pod YAML, sorry for going back again. Yeah. So if you notice it here, pod के YAML में भी हम metadata define करते हैं, labels define करते हैं, pod का नाम define करते हैं. We also define the spec for the container ka definition, right? So all those things are here. Why this template and why this section is here? Because as you know, deployment से बनते हैं pod के अंदर होता है container, तो हमें कहीं पे तो pod का definition बताना पड़ेगा. So that definition in deployment is here, pod definition. और आपको पता है pod से containers बनते हैं.
right? Pod creates a container. Pod can have a multiple container. So that definition of the container, which container should start with this pod, is here. So this is how this is structured. Deployment के अंदर pod का definition आता है और pod के अंदर containers. So now we don't need to create a container separately. We don't need to create a pod separately. We will directly use the deployment. Deployment के अंदर आप replica बता दो, replica count. So it will create those many number of replicas of this pod. ये जो pod का definition है वो यूज करके उसके 3 replicas बनेंगे because we have set 3 replicas here. Okay, so that was quick overview for new joiners, the definition for your deployment. Okay, yeah, we saw this how this actually works. Deployment से replica set बनते, replica set creates a pods and pod creates a container using a images. And then we saw how to roll back, how to manage your deployment. So इसके कुछ easy commands है. kubectl git deploy करोगे या फिर deployments लिखोगे, you will see the number of deployments currently. You can also see the description of the deployment. You can edit the deployment. You can delete the deployment using a kubectl delete command. So yeah, if you notice it, ज़्यादा कुछ commands याद रखने का जरूरत है नहीं. You mean sorry, I mean most of the part is same. kubectl आता है पहले, उसके बाद हम ऑपरेशन बता दे, गेट आएगा, डिस्क्राइब आएगा, एडिट, डिलीट या फिर क्रिएट, ऐसे कुछ कॉमन ऑपरेशन है which will be available for all kind of resources. So kubectl उसके बाद ऑपरेशन एंड उसके बाद आएगा एक्चुअल योर रिसोर्स, मतलब कौन से रिसोर्स पे आपको ये ऑपरेशन करना है. सो हमने अभी तक रिसोर्सेस देखे कि नेम स्पेस देखा है, नेम स्पेस, उसके बाद डिप्लॉयमेंट अभी देख रहे हैं, डिप्लॉयमेंट हमने pod देखा है. So all these commands, all these operations are available on your these resources pod, right? Replica set, these are the short notations for your resources. ns मतलब namespace, deploy मतलब deployment, pod मतलब pod, उसका कुछ शॉर्ट हैंड है नहीं. Yeah, I think it's there. po आप अगर लिखोगे it is also same as pod. एंड रेप्लिका सेट, आपको अगर पूरा रेप्लिका सेट लिखने में टाइम जाता है, सो यू कैन यूज अ शॉर्ट हैंड नोटेशन एज आरएस यूज करो. सो इट इज सेम एज रेप्लिका सेट. ओके, सो फर्स्ट आएगा kubectl, उसके बाद आएगा ऑपरेशन एंड उसके बाद आएगा रिसोर्स एंड देन रिसोर्स नेम जो भी है. सो दिस इज अ कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ योर कमांड. ओके, ऑपरेशन हमने देखे कि ऑपरेशन कौन से हो सकते हैं, गेट, डिस्क्राइब, एडिट, डिलीट, क्रिएट, ऐसे कुछ हो सकता है. सो दिस इज योर kubectl कमांड स्ट्रक्चर. ओके, बस इतना याद रखना है. So these are same for most of the resources. And then we covered how to update the deployment. आपको पता है डिप्लॉयमेंट जब हम अपडेट करते हैं तो एक रिवीजन बनता है, हर एक डिप्लॉयमेंट का रिवीजन बनता है. लेट्स से हमारा व्हाट्सएप का एप्लीकेशन है, तो व्हाट्सएप के एप्लीकेशन के लिए बहुत सारे अपडेट्स आते हैं ना, और एक नया वर्जन अपडेट होता है, राइट? इफ द करंट वर्जन इज V10, मतलब वर्जन 10 है, उसके बाद नया वर्जन आएगा V11, और आप प्ले स्टोर पे जाके वो अपडेट करोगे व्हाट्सएप, राइट? ऐप अपडेट करोगे और फिर कुछ नए फीचर्स ऐड हो जाएंगे. सिमिलरली क्यूबरनेटिस में भी आपका एप्लीकेशन मैनेज करने के लिए सेम चीज होता है. यू कैन create different deployments to manage your application. जैसे कि व्हाट्सअप हम उसी को कंसिडर करते हैं, उसी एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं. तो व्हाट्सएप का कोई फीचर आपको अच्छा नहीं लगा और यू माइट फील कि लेटेस्ट वर्जन में कुछ बग्स है या फिर सिक्योरिटी का कंसर्न है, दैट्स व्हाई यू वांट टू गो बैक टू द प्रीवियस वर्जन. तो आप क्या करोगे, आप प्ले स्टोर पे तो आपको वो फीचर नहीं मिलेगा दैट यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस वर्जन. आप इफ यू हैव अपडेटेड यू कैन गो बैक, राइट? सो यू विल गो टू द ब्राउजर और आप उसका एपीके सर्च करोगे व्हाट्सएप V10 एंड वो आप एपीके डाउनलोड करोगे एंड यू विल इंस्टॉल दैट. बट इन केस ऑफ द Kubernetes you get that functionality कि आपका एप्लीकेशन
जो pod में चल रहा है, if you need to go back to the previous version, you can do that. That we checked, right? Which means these commands: kubectl rollout history, rollout status, and rollout undo. So ये दो तीन commands है which you can use to go back to the previous version or to the specific version. So kubectl rollout undo deployment, and you if you do the if you want to roll back to the previous version for this my deploy, you can specify the revision with the two revision. Okay, so we saw that in detail last time. What I'll do, I'll start my this environment first, and we can check it. Okay. Uh, ये आपको पता है how to create a test cluster या फिर sandbox cluster for you to practice. We'll use this labs play with Kubernetes. So it's a quick revision to set up base for our today's class, Canary or blue green deployment. Okay, so my control plane node is ready. I'll create one more node which will act as a worker node. So from worker node, I'll run this command to join this cluster. Okay, so we have this cluster ready. kubectl get nodes करके देखते हैं. We have two node cluster. So what we'll do, we'll copy this YAML file of us. एक यहाँ पे deploy फाइल बनाते deploy.yaml. ठीक है, इससे हमारा 3 pods बनेंगे using nginx table image. You know how to create a deployment using a file. kubectl apply -f कर दो and it will create deployment for us. Okay, there is no namespace called to. Fine. We'll create this deployment in default namespace. Okay, let's check kubectl get deploy करते तो फिर हमें डिप्लॉयमेंट का लिस्ट दिख जाएगा. So we have one deployment, nginx deployment, and there are 3 pods running for this deployment. kubectl get pods करके we can check the list of the pods. You can see there are 3 pods running, correct? So if you do the kubectl rollout history deploy and deployment name nginx dep. So you will see there is one revision. मतलब अभी इस एप्लीकेशन का nginx deployment एप्लीकेशन का एक ही बार हमने चेंज किया. So if we do one more change, it will create a new revision for us. Okay. So let's try to edit this deployment and एक छोटा सा कुछ चेंज कर देते हैं जिससे एक नया रिवीजन बन जाए इसका. Maybe we'll try to change the image. We are right now we are using nginx table, तो इसको चेंज कर लेते हैं and we can do 1.14. चेक कर लेते हैं कि कौन सा वर्जन है अवेलेबल. डॉकर हब पे जाके nginx की कौन से वर्जन है. So search here for the nginx image, nginx, and we will see the all available versions of this nginx. Okay, so we were using stable. Let's try something else. 1.14.
1.14.2 ऐसे ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। सो आई चेंज द वर्जन 1.14.2 करते हैं इसको, एंड इट शुड क्रिएट न्यू रिवीजन फॉर सी। एक नया रिवीजन बन गया, मतलब ये जो फर्स्ट रिवीजन है दैट इज यूजिंग nginx स्टेबल इमेज, एंड द सेकंड वन इज क्रिएटेड फॉर अ न्यू चेंज, जहाँ पे हमने इमेज चेंज किया 1.14.2 इमेज बना है। ओके, इफ यू डू वन मोर चेंज, इस डिप्लॉयमेंट के लिए और एक चेंज कर देते हैं, इसका इमेज चेंज करते हैं 1.15 करते हैं, then it will create one more revision for us. Okay, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज मेंटेनिंग द रिविजन्स फॉर अस। जैसे व्हाट्सएप का मल्टीपल वर्जन्स रहते हैं, सिमिलरली यू कैन create multiple revisions for your application, and whenever you feel like this latest version is not working, I want to use or go back to the previous version, maybe for testing or for production use, then it's very easy for you to go to the previous version using a deployment rollback. Okay, so what you can do, you just need to run one single command, simple command आपको run करना है, kubectl rollout undo deployment, which deployment you want to undo, nginx deployment, और कौन सा revision चाहिए, to revision 2, second revision को जाना है हमें, right? See, इसने एक नया रिवीजन बनाया, सेकेंड वाला रिवीजन था तो वो निकल गया, एंड इट हैज क्रिएटेड न्यू रिवीजन फॉर दिस। इफ यू चेक नाउ, एडिट डिप्लॉय करोगे तो जो सेकेंड रिवीजन में जो इमेज था ना, दैट वी विल सी हियर नाउ। सर्च इमेज हियर, सी 1.14.2 हमने सेकेंड रिवीजन में बनाया था, सो इट गॉट ऑटोमेटिकली चेंज, which means we rolled back to the revision 2 जहाँ पे ये चेंज था। It is very easy. Okay, git pods and git deploy. So if this is clear, and you can see the pods got also recreated, नए pods बन गए इस revision के लिए। If you check the image here for this pod, you will see, let's try to describe करके देखते हैं, you will see the container image is using 1.14.2. So whenever we are doing any change into deployment, it is going to recreate all the pods. It is going to recreate all the pods. So how it actually happens behind the scene, ये क्या कैसे करता है, वो चेक करने के लिए we need to understand the deployment का रोलिंग स्ट्रेटेजी। मतलब ये रोलिंग स्ट्रेटेजी जो होते हैं, ब्लू ग्रीन कैनरी या फिर रोलिंग अपडेट, इसको समझ लेते हैं पहले। इफ यू नोटिस हियर, ये देखो इवेंट्स वाला पार्ट, तो ये क्या बोल रहा है, स्केल्ड अप रेप्लिका सेट टू nginx डिप्लॉयमेंट टू 3, पहले इसने 3 रेप्लिकास बनाए, देन scale to 1, and then 3, it is continuously changing this replica count। जब हमने चेंज कर रहे थे ना, तो it is restarting those pods one by one। okay, एक pod delete करता है and it is creating new pod, it will delete the older pod and it will create a new pod with the new changes, ठीक है। स्ट्रेटेजी टाइप, इफ यू सी हियर, इट्स अ रोलिंग अपडेट। रोलिंग अपडेट में क्या होता है, एक पॉड, इफ देर आर 3 pods right now in this system, in this Kubernetes cluster, so it will delete one pod and it will create a replacement pod for that। so it will not delete all the pods at the time, मतलब सारे के सारे pods build कर दे and then it will recreate। तो उस केस में क्या होगा
कि आपका एप्लीकेशन पूरा डाउन हो जाएगा. वी डोंट वांट दैट. सो रोलिंग अपडेट में it recreate a replacement pod. So let's say these are my three pods right now. Okay, this pod 1, pod 2, and pod 3. So what it will do, it will delete this pod, ये pod delete कर देगा, and it will create a new pod n1. मतलब जो भी आप डिप्लॉयमेंट में चेंज कर रहे हो उसके लिए उसके उस चेंज के साथ एक नया pod बनेगा. Once this pod is ready, it will delete the second pod and it will create a new pod. Once this second pod is ready, it will delete the third pod and it will create a new pod n3. Okay. इससे क्या होता है? If you delete all these three pods and इन pod को आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, so during this time interval आपके पास कोई भी application नहीं होगा running in your cluster. And if this application जैसे Amazon या फिर WhatsApp आपका application का कोई भी instance नहीं है cluster में during this time, तो कितने लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं, राइट? मतलब उनको एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन रनिंग ही नहीं है आपकी क्लस्टर में. सो टू अवॉइड दैट, दिस कुबरनेटिस यूजेस अ डिफॉल्ट स्ट्रेटजी एज अ रोलिंग अपडेट. हमने कोई भी अभी स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा स्ट्रेटजी यूज करना है. सो रोलिंग अपडेट में इट क्रिएट्स अ रिप्लेसमेंट पॉड वन बाय वन. डिलीट सारे के सारे पॉड्स डिलीट नहीं करता. ओके. Yeah, so sorry. Is it clear for you? Rolling update, how it works? Okay. Okay, good. और आप ये इवेंट्स भी देख सकते हो रिप्लिका सेट का. Sorry, let's. So जो पुराने रेप्लिका सेट बना, या also कैपेसिटल गेट रेप्लिका सेट. तो इसमें 3 रेप्लिका सेट बनाए थे इस डिप्लॉयमेंट के लिए. एंड हर रेप्लिका सेट में वी हैव डन सम चेंज. पहले जो रेप्लिका सेट है विच इज द ओल्डेस्ट वन, इट शुड बी यूजिंग अ nginx टेबल. जो सेकंड था उसमें वी डिड अ चेंज इन इमेज 1.14.2 इमेज था. एंड थर्ड जो था उसमें 1.15 हमने यूज किया था, राइट? सो इट विल सेट द रेप्लिका सेट काउंट. रेप्लिका सेट में जो पॉड का काउंट है, इट विल सेट इट टू 0, जो चल नहीं रहा, विच इट इज नॉट यूजिंग करंटली. एंड विच एवर रिवीजन और द रेप्लिका सेट वी आर यूजिंग, इट विल सेट द काउंट टू जो हमने रेप्लिका का काउंट सेट किया उसको सेट कर देगा. And one thing you want to notice here, it is automatically scaling down pods one by one. 2 से 3 out of 2, 2 out of 1, 1 out of 0. तो 1 by 1 ये pod delete करता है and one it creates a replacement pod for that. Okay, so that is rolling update strategy for you. Okay, what is next? Okay, what is next? So autoscaler बाद में लेंगे. So what next? There is another deployment strategy, blue green. Blue green में क्या होता है that we are going to see. So blue green deployment is a deployment strategy in which you create two separate but identical environments. Okay. One environment we call it as a blue, which is running the current application version, and one environment, additional environment, we are going to call it as a green environment, is running the new application version. जैसे हमने अभी देखा कि अगर हमें कुछ एप्लीकेशन अपडेट करना है, then we will create a new docker image, right? हम docker image use करेंगे and we will update that docker image tag in a deployment. So deployment, blue green deployment में हम same deployment को change नहीं करेंगे. We are going to create two separate deployments here. We'll see. Using a blue green deployment strategy,
Blue-green deployment strategy increases the application availability and reduces the deployment risk by simplifying the rollback process if a deployment fails. Once testing has been completed on the green environment, live application traffic is directed to the green environment and the blue environment is deprecated. So इसमें तीन चार steps है blue green आपको कैसे implement करना. So let's see Kubernetes blue-green deployment in action. Imagine we have version 1 of a awesome application called Maya. एक हमारा application है Maya and that is currently running in a blue, which means there is only one deployment right now for our application Maya. Okay, and our pods are running, everything is fine. But what if you want to release your new version, but आपको proper test करना है आपके production environment में, तो आप क्या करोगे? So sometime later we have a next version V2 ready to go. So we create a brand new production environment called green. Similar हम environment create कर रहे हैं जैसे हमारा production environment में उसी production environment का और एक replica बना रहे हैं, उसी application का और एक replica बना रहे हैं. As it turns out, in Kubernetes, we only have to declare a new deployment and the platform takes care of the rest. Users are not yet aware of the change as the blue environment keeps on working unaffected. जो भी ट्रैफिक आ रहा है यूजर से अमेजोन का वेबसाइट है तो हम दो वर्जन्स बनाएंगे दो डिप्लॉयमेंट्स बनाएंगे वन इज ब्लू जहाँ पे करंटली ट्रैफिक इज गोइंग एंड अनदर replica or the deployment we have created we are calling it as a green but that is a v2 जहाँ पे एक नया वर्जन है हमारे अमेजोन का okay but this version our users don't know it because still we are testing it. Okay, once we finalize the testing proper chal raha hai, our v2 application is amazon application is working fine, then we will divert the traffic from v1 to v2. Okay, so they won't see any change until we switch traffic over from blue to green. Okay, so the third step is it said that only developers that like to live dangerously test in production, but here we all have chance to do that without a risk. We can test a green at ledger on same Kubernetes cluster where blue is running. Okay, so हमने testing कर दिया properly, then we can move the traffic from blue environment to the green environment once our testing is done. Okay, and once the green environment is working fine, we can move the users from blue to green and happy with the result. We can delete the older environment, older blue environment to free up resources. So this is a 4-stage process. So what we are saying कि हमारे एक deployment है Nginx का. Okay, this is deployment 1 which is using 1.14. ठीक है 1.14 वर्जन यूज करें एंड एक नया रिवीजन आ गया या फिर नया इमेज आ गया Nginx का which is 1.15. So we'll create a again new deployment using this image 1.15. तो पहले तो जो करंट यूजर्स है दे आर यूजिंग 1.14 डिप्लॉयमेंट. ठीक है, जो भी ट्रैफिक आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है. हम क्या करेंगे सेम एक नया डिप्लॉयमेंट बनाएंगे यूजिंग अ न्यू इमेज बट यूजर्स का ट्रैफिक अभी डायरेक्टली मूव नहीं करेंगे. वी आर डूइंग सिंपल टेस्टिंग हियर. वी आर कॉलिंग इट इज अ green environment and this is a blue environment. Okay, so yeah, once that testing is done with this new version of our application, we can start sending the traffic to this और यहाँ पे ट्रैफिक भेजेंगे एंड ये वाला जो रिवीजन है ये वाला डिप्लॉयमेंट है उसको डिलीट कर देंगे. वंस वी आर श्योर दैट आवर लेटेस्ट वर्जन ऑफ आवर एप्लीकेशन इज वर्किंग फाइन, देन वी कैन डिलीट. ओके, सो दिस इज अ ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट फॉर यू. इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. सो आई हैव एन आपको डिप्लॉयमेंट का तो स्ट्रक्चर अभी पता चल गया है राइट. सो इसमें कुछ ज्यादा आपको परेशानी होगी नहीं. ओनली थिंग इज वी हैव नॉट कवर्ड द सर्विस पार्ट बट आई विल गिव यू ओवरव्यू कि सर्विस क्यों यूज होता है एंड लेबल्स एंड सिलेक्टर्स भी काम आ जाएगा. ओके,
So we are going to create first deployment of our application, Nginx deployment. It's using Nginx stable. This is fine. 1.14 का एक deployment बनाते हैं यहाँ पे. kubectl git deploy, which we already have here. 1.14.2. Yeah. And imagine करो कि एक नया वर्जन आया हमारे Nginx का. So we don't want to delete this deployment and the pods immediately. What we'll do, we'll create a new deployment and using a latest version 1.15 के साथ use करते हैं. Okay. So going back to the service part, ये service use क्यों होता है? So with the service, you can access your application within a cluster or from your node or from anywhere in the world. So there are 3 to 4 main types of the services. Services to access the application which is running in your Kubernetes cluster. Okay, so इसके बहुत सारे use case है. We are going to see that in a service class, but just to give you overview, service use कैसे होता है. So see यहाँ पे kind आएगा service, जैसे deployment में deployment define करता है, and we are going to give some labels and the names to the service, जैसे हमने deployment and pod में भी किया था. The main part is here, selector and the ports. Okay, so what we are saying, you know, ये जो labels हैं, labels and the match. So find out the pods which have these labels. Find out the pods which have these labels, and जो भी traffic आएगा, that traffic should be distributed between these available pods. Okay. I'll draw it here. We are saying कि हमने deployment से 3 pod बनाए, pod 1, 2, 3. और आपको पता है पॉड का नेचर कैसे होता है. पॉड इज ephemeral. पॉड का आईपी एड्रेस भी हमेशा चेंज होता है एंड पॉड का नाम भी अलग अलग हो सकता है. सो डिप्लॉयमेंट विल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू पॉड्स अगेन एंड हर पॉड का आईपी एड्रेस चेंज होगा. बट वी नीड सम एंटिटी जो होगा सर्विस, and user ko, if we ask user to access these pods which keeps on changing its IP and the name, it will be very difficult. अगर कुछ नया pod आ गया तो फिर क्या करें. But we need one single entity which can handle this all these things. कि इस service को access करो. You don't need to access these pods which are ephemeral and changing the IPs. We are going to ask user to access this service का IP and the port वगैरह we are going to ask user to access these pods or the application using the service IP instead of accessing the pods directly. So even if there is new pod created, P4 भी आ गया, so user को कोई problem नहीं होगा because they are going to access the service which is communicating to the pods. Okay, even this pod get deleted, no problem. यूजर को कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा बिकॉज यूजर इज एक्सेसिंग सर्विस नॉट द पॉड. हाँ, तो ये सर्विस एंड पॉड का रिलेशन क्या है अभी. आपने देखा होगा डिप्लॉयमेंट में हम कुछ लेबल्स डिफाइन करते हैं, राइट. इस पॉड को लेबल्स देते हैं, ऐप Nginx डिप्लॉयमेंट एंड ऑल्सो फॉर द डिप्लॉयमेंट. सो सर्विस क्या करेगा, ये ट्रैफिक कैसे फॉरवर्ड करता है. इट फॉरवर्ड द ट्रैफिक विद द हेल्प ऑफ लेबल्स ऑफ द पॉड्स. सो if the pod has a matching label, then service forward the traffic to that pod. Okay, तो label and selector यहाँ पे यूज होता है एक्चुअली. सर्विस select pods which has the matching labels. ठीक है. So now service is not going to check the IPs of this pod because it's not a permanent thing. It's keep on changing. It's a dynamic IPs which pods get, right? So instead of that, we have something which is static labels. हर pod को एक label assign होगा whenever it creates, and service is going to use those labels to group those pods.
ठीक है, इस पॉड्स को ग्रुप करने के लिए लेबल्स अभी यूज करेगा. एंड हाउ इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू यूज द सिलेक्टर्स टू मैच दिस लेबल्स. एंड अगर ये मैचिंग लेबल्स होंगे देन इट विल ग्रुप दोस पॉड्स अंडर वन सर्विस विच इज हियर. यहाँ पे हम लेबल्स डिफाइन करें पॉड को, एंड सर्विस में आप देखोगे सो वी आर सिलेक्टिंग दोज लेबल्स. सो डिफाइन द लेबल्स फॉर द पॉड्स टू ग्रुप अंडर दिस सर्विस, एंजेनिक सर्विस के अंडर ये सारे पॉड्स आ जाने चाहिए. एंड कहाँ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है दैट विल बी डिफाइंड यूजिंग अ पोर्ट्स. सर्विस का पोर्ट कौन सा होगा एंड कंटेनर का पोर्ट कौन सा होगा. सो दैट इज डिफाइंड हियर इन द सर्विस. Okay. I hope the labels and the selector part is clear. If not, I can explain you again.
Hi guys, am I audible? Okay, thank you. Sorry, sorry about that. ब्राउजर का कुछ इशू है बट नेक्स्ट टाइम आई फिक्स इट. पहले तो ये सॉल्व करना पड़ेगा कुछ ये स्टक हो जाता है व्हेन आई स्क्रॉल थ्रू द चार्ट इट गेट्स स्टक. ओके आई टेक ऑल क्वेश्चंस लेटर. इफ आई स्क्रॉल ये फिर से हैंग हो जाएगा. ओके. हाँ. So yeah, rolling update is a default strategy. Uh, Rolling update also provides you HA, but there are a few more fields you will need to configure, and um, yeah, these are the different ways you can implement the HA, high availability. Blue green or rolling update is also fine. So native is a rolling update, which creates a pod one by one. मीन्स एक पॉड ओल्डर पॉड डिलीट करेगा एंड नया पॉड बनेगा. फिर से एक ओल्ड पॉड डिलीट करेगा और नया पॉड नया पॉड बनेगा. So yeah, your application will not go down entirely. Okay, इसमें ना दो फील्ड्स आते हैं डिफॉल्ट. यहाँ पे कुछ है होगा मैक्स अनअवेलेबल एंड मैक्स सर्च. ओके. So max unavailable option क्या करता है? Option field that specifies the maximum number of pods that can be available during the update process. And max search is an optional field, maximum number of pods that can be created over the desired number of pods. सो आपको नए पॉड्स कितने चाहिए एंड द ओल्डर पॉड्स कितने चाहिए, या फिर एट द टाइम कितने पॉड्स अवेलेबल होने चाहिए या फिर अनअवेलेबल होने चाहिए आपके क्लस्टर में of new replicas that you can define using a max unavailable or max search. So for example, when the value is set to 30% of the max unavailable, the old replica set can be scaled down to 70% of the desired pods immediately. So maximum you can scale down up to 70%. Okay, which means at least sorry 30%. 70% parts आपके होने ही होने चाहिए old replica set. If there is it will not reduce that count. Okay, if you set the 30%. And similarly for the max search is an option that specifies the maximum number of pods that can be created over the desired number of pods. मतलब नए pods कितने बनने चाहिए at a time. The value can be absolute number. You can specify the number of pods or you can specify the percentage. So when you specify the value to the 30%, maximum search value to 30%, the new replica set can be scaled up immediately when the rolling update start, and the new pods does not exceed 130% of the desired pods. Once old pods have been killed, the new replica set can be scaled up further. So the combination of the old and the new pods you can manage using a max unavailable and a max search fields. Okay, so you can explore these options: max search, max unavailable. Okay, and this is in case of the rolling update. Can we achieve zero downtime using a rolling update? And in what case rolling update delete the old pods? It's very obvious that rolling update will delete the old pods when the new pod is ready, and when there is a change, right? When there is a change in your deployment, it will try to create a new pod. And zero downtime, yes, possible, but you will have to manage the it using the max unavailable and the max search fields. ओके. बट ब्लू ग्रीन में हम क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पे देखा होगा स्टेप बाय स्टेप ये ट्रांजिशन हो रहा है. हम सिमिलर रेप्लिका बना रहे डिप्लॉयमेंट का या फिर हमारे एप्लीकेशन का, एंड वेन एवर द एंटायर एप्लीकेशन इज रेडी,
we are simply changing the arrows या फिर simply changing the traffic. That traffic is controlled by the service, right? तो हम क्या बोल रहे हैं, हम we are going to create two replicas of same application. So this is a blue, आप इसको label कर दो blue, and service will point out first to the blue deployment, and you will also create one more deployment called green या फिर v2 वगैरह ऐसे कुछ tag दे दो. So first time your service is point to this deployment, and whenever your new deployment is fully ready to handle the traffic, you can change the label in service. एक सिंपल आपको लेबल चेंज करना है, जहाँ पे हम सिलेक्टर में बोलते हैं ना, सिलेक्टर में यहाँ पे देते हैं लेबल्स, तो यहाँ पे चेंज कर दो, ग्रीन कर दो, एंड इट विल स्टार्ट redirecting the traffic to the new deployment. That's the only change you need to do. Let's try it out. हम हमारे पास ऑलरेडी एक डिप्लॉयमेंट है, so we'll use that. उसका लेबल क्या है, कुछ को अपडेट कर देते हैं चाहिए तो, kubectl edit deploy nginx. Okay, selectors, strategy, rolling update, templates. You can see ये डिफॉल्ट भी रोलिंग अपडेट आप यूज करते हो ना, तो मैक्स सर्च एंड मैक्स अनअवेलेबल डिफॉल्ट ही सेट कर देते, मतलब मैक्सिमम न्यू पॉड्स कितना चाहिए और मैक्सिमम अनअवेलेबल कितने रह सकते हैं, जो ओल्ड पॉड्स हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू मेक इट एज, और एक नया लेबल ऐड कर देते हैं, which is version v1. This is our v1 version app. Okay. एंड सिमिलरली और एक डिप्लॉयमेंट बनाएंगे, यूजिंग डिप्लॉय. यहाँ पे भी एक लेबल दे देते, एक मिनट. या सो विल गिव हियर वर्जन एक्ट्स v2. ये हमारा सेकेंड है डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे वी आर यूजिंग लेटेस्ट 1.15, वी आर यूजिंग लेटेस्ट इमेज ऑफ द इंटरनेट. तो ये वाला भी डिप्लॉय करें, kubectl apply -f deploy to. मतलब हमारे पास अभी दो दो वर्जन है हमारे एप्लीकेशन के. kubectl get deploy करके टेस्ट कर दो. I think we did not change the name of the deployment. Green. kubectl edit deploy ने existing को ही change कर दिया. So I'll revert back that change. जो लेबल था हमने ऐड किया था, इसको v1 करना है हमें. This should be v1 and image should be 1.14.2. This is our v1 app जहाँ पे nginx 1.14.2 image use कर रहे. Label we have given as a nginx deploy and version is v1. और एक ये बना लेते हैं deployment using this.
Let's verify. We have two deployments now, and both are using different images. Nginx deployment is using 1.14.2, and this one Nginx deployment v2 is using 1.15. Okay, so इसको ट्रैफिक हम कैसे मैनेज करेंगे? So we'll create a service. एक सर्विस बनाते हैं. सर्विस फाइल. सर्विस फाइल I explained you. तो सर्विस फाइल में we gave a type. Node put use कर रहे हैं अभी. We'll see that in detail. And here we are specifying the tags, labels specify करते हैं. इसको v1 बोलते हैं. And app is Nginx. Nginx dep, right? We'll create this service kubectl apply -f जिससे we can access our application. You can see here our service is ready. Port 30867. Okay. Thank you for using Nginx. So right now we are pointing out our service to older version v1 को point out करें. Why? How? You can see the labels जो हमने सर्विस को लेबल दिया था मैचिंग करने के लिए. Okay, so we have set it to version v1, so it is right now pointing out to v1 deployment. If we want to let's after that हम क्या करेंगे? हम verify करेंगे that our second deployment is also working, v2 work कर रहा है. And to divert the traffic from v1 to v2, you just need to change the labels in your service. kubectl edit service कर दो. आपको सिर्फ लेबल्स जो सिलेक्टर्स में लेबल दिए थे उसको चेंज करना है. ओके, इसको v2 कर दो. सो इट विल स्टार्ट डाइवर्टिंग द ट्रैफिक फ्रॉम v1 to v2. ओके, so that is blue green deployment. आपको दो deployment बनाने हैं and verify your second the latest deployment is working fine, and just do a change in your labels in a service, so it will redirect the traffic from v1 to v2. Once your v2 is working fine, just delete the older version. kubectl git deploy. ओके, अभी हमारा सेकेंड वर्जन चल रहा है. देन वी कैन डिलीट द डिप्लॉयमेंट v1. delete deploy nginx deploy, and you will see we still able to access our service. ठीक है ना? We are still able to access because we are pointing to v2 revision, v2 version को point कर. Blue green is clear. Yeah, we need to delete the resources of the v1 because it will consume some space, right? It will consume the resources on your cluster. So not immediately, just make sure that your new deployment is working fine, your application is working fine, user are able to access, then only you will need to delete it. Immediately delete करना risky हो सकता है. Just in case जो आपका नया वर्जन चल रहा है which you have deployed, if we don't work as expected, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है. So make sure you are not deleting your older revision immediately. How to access it's recover. We are using this free uh, sandbox, play with Kubernetes.
दैट्स व्हाई आई विल नॉट एबल टू, यहाँ पे आप ब्राउजर हमें मिलता नहीं है। That's why I'm using a call command which will work same. मतलब हम इस एंड पॉइंट को एक्सेस कर रहे यूजिंग a call. If you deploy it in your environment and you are using a node port service, तो आपको क्या करना है? You can write out on your end. हमने एक nginx service बनाया which is of type node port. Okay, so you can access that service on this port. जो यहाँ पे जो port आता है ना 30867, it can be a random port or you can specify it as well. You'll need to do just जो भी आपका host का IP address है, on that host you can do uh, like ब्राउजर में जाओ, IP एड्रेस कोलन नोड पोर्ट जो भी है एंड एंड पॉइंट ऐसे एक्सेस कर सकते हो आप। Since we are using this sandbox environment, we don't have a browser here, तो यहाँ पे दिखा नहीं सकता। But we are doing to access our application using a service, कल कमांड यूज कर रहे हैं। कल में हम क्या बोल रहे हैं कि यूज अ लोकल होस्ट, मतलब जहाँ पे मेरा ये एप्लीकेशन एक्सपोज है, लोकल होस्ट कोलन नोड पोर्ट, मतलब नोड पे कहाँ पे ये एक्सपोज हुआ है एप्लीकेशन, सो यू कैन एक्सेस इट सेम एज ऑन योर क्लस्टर एज वेल। आपके नोड का आईपी एड्रेस दे दो कोलन नोड पोर्ट दे दो विच वी हैव डिफाइंड इन अ सर्विस एंड you can access your application. Okay, even if one pod get failed due to xyz reason, rolling update will deploy the new pod, right? No, as we discuss here, ये जो max unavailable set करता है ना, max unavailable and the max search, उतने replicas old pod के and new pod से होने ही चाहिए। If it fails to create a new pod with a new version, then it will try to get at least the older version, मतलब उतने pods maintain करके रखेगा। या इन केस ऑफ द रोलिंग अपडेट, बट ब्लू ग्रीन में हम पूरा चेंज कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सेपरेट एनवायरनमेंट, आइडेंटिकल एनवायरनमेंट, एंड जब नया एनवायरनमेंट रेडी होगा देन वी विल स्टार्ट मूविंग द ट्रैफिक टू द न्यू वर्जन। ओके, इज इट क्लियर ब्लू ग्रीन? ओके, so we can move to the next strategy, which is the canary deployment. Canary deployment is similar like blue green, but थोड़ा सा इसका जो base है that is different. So Kubernetes canary deployment is a technique for rolling out a new feature or changes to a small subset of users or servers before releasing the update to the entire system. अब हम सेपरेट आइडेंटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू डायरेक्ट द ट्रैफिक एंटायरली टू द न्यू सिस्टम। क्या पता कि न्यू सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो, so to avoid those kind of problem we are going to roll out the new feature to subset of the users जो भी हमारे consumers हैं। So this is done by creating a new replica set with the updated version of a software while keeping the original replica set running. तो अब this we are also doing in a blue green, right? हम दो replicas बना रहे हैं, मतलब दो replicas हमेशा होंगे, one is a blue and one is a green. ओके, V1 एंड V2, तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करें, एंड a small percentage of traffic is then routed to the new replica set while most of the traffic continues to be served by the original replica set. जैसे हम ब्लू ग्रीन में नया हमारा रेप्लिका या फिर एनवायरनमेंट बन जाने क्रिएट होने के बाद we were redirecting the traffic directly whether it's working or not,
वो हमने पहले टेस्ट किया था, बट व्हाट इफ वी गेट अ सडन ह्यूज ट्रैफिक ऑन अ न्यू एनवायरनमेंट, तो क्रैश हो सकता है या फिर वट एवर रीजन. So to avoid that kind of problem, we are going to use a canary. A small percentage of traffic is then routed to the new replica set. हम पूरा का पूरा 100% ट्रैफिक नहीं रिडायरेक्ट करने वाले, हम परसेंटेज में छोटा छोटा ट्रैफिक ट्रैफिक रिडायरेक्ट करेंगे. ओके, दिस अलाउज फॉर द न्यू वर्जन टू बी टेस्टेड इन अ लाइव एनवायरनमेंट while minimizing the risk of issues affecting the entire system. Okay, if issues are detected during a Canary deployment, it can be quickly rolled back to the original replica set. हम परसेंटेज में डिवाइड कर रहे ट्रैफिक. अभी 50% we can send it to the new version and 50% we can keep it to the older version. Once we are satisfied, okay, new version चल रहा है, then we can increase the traffic slowly. 75 new version को दे दो and 25 you can keep it to the older version. And once that is going good, then you can start rolling out 100% traffic to the newer version. Okay, slowly slowly kare. If something goes wrong, we can increase the traffic to the older version, या फिर we can increase 100% traffic to the older version, and so that we can, avoid the problems with the newer version. Yeah, Canary deployments are a valuable tool for minimizing the risk and ensuring high availability in a complex distributed system by allowing for a control testing of changes before they are released to the entire system. हम Amazon का एप्लीकेशन, राइट, पूरी दुनिया यूज करते हैं Amazon एप्लीकेशन. एंड इफ दे हैव अ न्यू वर्जन, अभी उनका V1 चल रहा है एंड दे हैव अ न्यू वर्जन V2, एंड they are getting a traffic to the V1, उनका V2 भी चल रहा है, ब्लू ग्रीन, हाँ चल रहा है, राइट. And if they start redirecting traffic from V1 to V2 directly, और V2 में कुछ प्रॉब्लम है, मे बी बिकॉज ऑफ इंटर्न को ब्लेम करेंगे वो, है ना, but for whatever reason it's not working. So what will happen, it will their customer will not be able to access the Amazon application website, access नहीं कर पाएंगे, and that will be a disaster. To avoid that problem, हम क्या करेंगे अभी, we can divide the traffic into small percentage. V1 चल रहा है ना, एटलीस्ट V1 तो चला, so 100% है फिलहाल. So we'll start moving traffic slowly. V1 पे 75 रखो, V2 पे 25 ट्रैफिक मूव करो. Then V2 चल रहा है 25% कस्टमर्स को, then we can increase it slowly. इसको थोड़ा बढ़ा दो अभी. You can make it 50%. 50% V2, 50% V1. At least पूरे के पूरे कस्टमर्स तो इम्पैक्ट नहीं होंगे with the Canary. 50% customers will get impacted अगर कुछ भी गलत होता है, and if we'll also get a chance to move the entire traffic. 100% कर देंगे अगर कुछ गलत होता है, इसको 0 कर देंगे. So this is the safest strategy which we can use in Kubernetes. Okay. Once added to our Kubernetes cluster, the Canary deployment will be controlled by services using a selectors and labels. हम इस केस में भी selectors और label ही use करने वाले. This service provides or forward traffic to the labeled Kubernetes environment or a prod, making it simple to add or remove deployments. So ये हमने blue green में देखा है that we use the services to control the traffic. Selector use करेंगे to forward the traffic to the particular pod या फिर environment को. Okay, initially you can have a specific percentage of users test the modify application, compare both the application deployment and increase the user percentage as your monitoring and user test produces no errors. जब हमें confirm हो जाएगा that new replica is working fine and it is working for most of the customers or the users, then we can increase the percentage traffic. Okay, this percentage can be gradually increased until all the users have tested the newer version of the application, and then the older version can be taken offline. Once our newer version is working fine, then we can delete the older version.
So this gradual process elevates any downtime and reduces the impact of your changes until they are tested live, while streamlining the transition between the application versions. If there are issues with a particular update, only a small section of the user base will be affected, and you can drop the Canary deployment until a more stable update is in place. Okay. अगर कुछ भी गलत होता है तो पूरा का पूरा कस्टमर या फिर यूजर को इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे कि अमेजोन का एप्लीकेशन पूरी दुनिया यूज करते हैं। वी कैन रोल आउट द न्यू फीचर टू द पर्टिकुलर रीजन। इंडिया को रिलीज कर सकते हैं, इंडिया के यूजर्स इम्पैक्ट होंगे, ठीक है ना। एटलीस्ट इंडिया के, पूरे दुनिया के नहीं हो सकते। Then if it is working fine for all India customers, then we can roll out the feature to the newer other regions as well. ऐसे कुछ कर सकते हैं. So we can minimize the impact of something going wrong into your deployment, and minimum impact होगा. Minimum people will get impacted, users will get impacted if you follow the Canary process. Okay, so how to use it? Uh, आपको एक Nginx ingress provides the weight help will be helpful. आपको क्या करना है, आपको दो सर्विसेज बनाना है या फिर ओके हम क्या करेंगे अभी, we are going to use the Nginx ingress controller which will help us to manage this traffic between the new deployment and the older deployment. So what is this Nginx ingress controller? It is ideal for exposing multiple services through a single external endpoint, while also enabling rules to define the for routing traffic. We can also configure the controllers to extend service capabilities and enable the external access to your pods with more flexibility. अगर हमारे पास multiple services होंगे, अभी तो होंगे because we are going to have a separate environment for our application, right? And we'll create different services. So you can create a ingress controller which will redirect the traffic, and also it provides annotations for you to manage the traffic. Canary different services के बीच में you can manage the traffic. Okay. So I'm not sure if this will work here in this environment, but I'll show you the demo. I'll try to show you the demo. Okay. So we have these two applications. We are going to create one more service for us, which is going to point out to the new deployment. Yeah, Ingress is going to be a top level resource to manage different services. आपको, yeah, this is the definition for you. Yeah, na? Ingress controller is ideal for exposing multiple services through a single external endpoint. जैसे कि सर आपको different services होंगे and you want to expose it to the it with a single endpoint, then you can use the ingress. Here you can specify the host and the service endpoints and on which endpoint it should redirect to which service. So that will be controlled using the ingress. Okay. And okay, let's see if we can create ingress resource here. Ingress.yaml service 2, sorry, service 2. So this is the same definition, right? This is our Canary service, which is going to point out to new deployment. Let me list down our deployments first. kubectl get deploy. kubectl, okay, our new deployment is here. और एक deployment लगेगा हमें to demo this. And in this one we will have the older version 1.14 इसको कर देते हैं, ठीक है। Copy deploy to deploy old.
YAML। तो एक नया रिवीजन होगा और एक ओल्डर रिवीजन होगा। ओके, इसको बोलते हैं 1.15। This is 1.15, we'll make it 1.14, and this is our v1 and this deployment is v1। हमारे पास अभी दो डिप्लॉयमेंट है, one is using nginx 1.15 and one is using 1.14। इसको डिप्लॉय कर लेते हैं, kubectl apply -f deploy hold। ओके, तो दो रिविजन, दो डिप्लॉयमेंट्स है हमारे पास अभी। डिप्लॉय v1 में 1.14 यूज करें, डिप्लॉय v2 में 1.15 यूज करें। सो व्हाट विल डू, हमारे पास एक सर्विस है kubectl get सर्विस, ठीक है। nginx, इसको v1 बोलते हैं और एक सर्विस बनाएंगे उसको v2 बोलते हैं। vi service.yaml, let me copy it, svc.yaml, vi svc.yaml। This service is for v1 deployment। और एक सर्विस बनाएंगे service2.yaml। This will point out to v2 deployment। Let's create this kubectl apply -f, let's create both of these services, v1.yaml service.yaml and service v2.yaml। okay, we have now our deployment ready, service ready। let's check, I deleted the previous service so it will not get confused। okay, हमारे पास दो डिप्लॉयमेंट है और दो सर्विसेज हैं अभी। two deployments, one deployment which is using 1.14 and this nginx v1 is pointing to that, and we have another service v2 which is pointing to deployment v2 which is using 1.15। so consider ये हमारा older version है and this is our newer version। तो हम क्या करेंगे, और एक ingress controller यूज करेंगे which will help us to manage these services using a single endpoint। यहाँ पे we can provide the name, okay। we are going to create a ingress controller to manage this service। so जब भी request आएगी example.com/पे, so it will forward it to this service। so we'll need to change our service name, nginx v1 कुछ है, so we'll use that, right, and it will forward the traffic to airport 80। so and with this जो weightage जो दे रहे हैं ना, so with this it will control the traffic, 20% traffic will get to this service and it will forward the traffic, only 20% traffic। okay, mm, it's v1 को only we are sending a 20% traffic।
कुछ एरर है फाइल में, लाइन नंबर 12 पोस्ट। ओके, वर्जन is not here. Okay, so this ingress is not available in this version extension v1 beta 1. Ensure CRDs are also installed first. Let's check this ingress is available in which version. Ingress controllers. Ingress, you can check this out as well. So Ingress control the external access to the service in your cluster, and it also provides the load balancing between the services. You can also implement the SSL termination and name-based virtual hosting. Okay, so something like this. Service के ऊपर आएगा अभी ingress, and it will have the routing rules. So based on the routing rule, it will redirect the traffic to different services. And service का हमें पता है, service uses selectors to forward the traffic to different ports. Okay, so I'll use this maybe. Ingress, it is this ingress resource is available in networking kts.io dot slash v1 इसमें available है. So let's try to use this definition only, and थोड़ा बहुत change कर देते हैं इसमें. हम क्या करेंगे, हमारा सर्विस का नाम है nginx v1, nginx v1, test path is slash test path. Okay, and we also need to provide the annotation, extra annotation कि कितना percentage traffic यहाँ पे आना है. That will be defined using this annotations. Canary weight 20% and canary should be true. And let's see if anything else. Labels add कर देते हैं. So this is your ingress definition. There is no path slash test path, right? So we'll keep it slash only. आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन से पाथ पे, मतलब अगर स्लैश टेस्ट पाथ किया तो फिर कौन से सर्विस को ये रीडायरेक्ट होना चाहिए. So we'll use the default only. Kubectl apply -f ing.yaml. Spelling mistake. Kubectl apply. Spelling mistake again. क्या बोल रहे? Error when creating ingress.yaml, ingress in version v1 cannot be handled as a ingress, strict decoding error. metadata dot label में error है. Okay, so we'll remove this. इसका कोई requirement है नहीं. Let's try again. We created this ingress, get ingress करेंगे. Okay. -yaml. So you will see कि हम अभी 20% ही ट्रैफिक फॉरवर्ड करें इस सर्विस को. And similarly, you can manage the traffic percentage using a ingress controller. If you आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे मल्टीपल राउट्स ऐड करने डिफरेंट सर्विसेज के लिए, एंड बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट यू कैन मैनेज द ट्रैफिक परसेंटेज यूजिंग दिस. ओके, इनग्रेस कंट्रोलर में और भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा. इनग्रेस कंट्रोलर is a type of ingress resource to work, and हम there are different versions for this. nginx का खुद का ingress controller है, and AWS का अलग है, Azure का अलग है. So you can use
different ingress controller to manage your traffic. Okay, which we are using is the Nginx controller. So आपको इसमें और डिटेल मिल जाएगा यहाँ पे ingress on minikube with the Nginx ingress controller. से यही हमने किया अभी. So whenever there is a call at the slash, we are forwarding the traffic to the this service. Host. Let's try to access it. kubectl git ingress करते हैं. तो host is nothing. यहाँ पे कुछ host दिया नहीं है. But if we type now call -i http ://localhost 80, it will forward the traffic. :localhost 80. We need to have some kind of DNS which maybe it's not working here. Yeah, let's give some host name in the ingress. kubectl edit ingress. एक डेमो वाला होस्ट नेम दे देते हैं. So उस होस्ट नेम पे when we call it helloworld.info या फिर nginx info and we type a slash, it should point to this endpoint. It's not allowing it to edit us because it is already created. तो इसको डिलीट करके फिर से बनाते हैं. Minimal ingress. Let me recreate using a host path. यहाँ पे एक नाम देते हैं. rules example host.com. Okay, so whenever we type this example.com/, it should forward us forward our traffic to Nginx v1 service. kubectl apply -f ing.yaml. Okay, let's try to access this. क्या है हमारा endpoint? example.com/et. Still not working. Fine, कुछ problem होगा. http still not working. You can see it is now redirecting it to our Nginx service v1. Okay. Similarly, if you want to do any changes, इसको redirect करना है दूसरे सर्विस को, तो हम क्या करेंगे, जो सर्विस का जो एंड पॉइंट सर्विस का नाम दिया था वो हमें बस चेंज करना है. So v1 ing में थोड़ा सा एक चेंज करते हैं and we will Nginx v1 की जगह हम will tell it to use a v2. Okay. Similarly, ये भी access हो जाएगा. And yeah, that's a Canary deployment. You can set the percentage in your ingress controller and redirect the traffic between the services. Yeah, okay.
या वी आर गोइंग टू हैव अ सर्विस स्पेसिफिक सेशन. उस सर्विस के लिए एक अलग क्लास लगेगा, बिकॉज सर्विस के सारे कंसेप्ट वगैरह हमें कवर करना है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सर्विसेज, तो थोड़ा टाइम लगेगा, दैट्स वाई. बट आई होप एक ओवरव्यू तो है आपके पास अभी, हाउ टू क्रिएट अ सर्विस और सर्विस क्यों यूज होता है. सो इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग द पॉड्स डायरेक्टली, बिकॉज आईपीज आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, इफ यू हैव द मल्टीपल पॉड्स, तो एक एक पॉड आप एक्सेस नहीं करते बैठोगे. यू नीड सम एंटिटी विच कैन बैलेंस द ट्रैफिक बिटवीन द पॉड्स, and even your pod gets deleted, एक entity होना चाहिए which user can access directly with its name and the port, and underneath pods रहेंगे. Service will take care of that. Service will manage the pods traffic, load balancing वगैरह manage करेंगे. um, yeah, no, not need to mention the host name in a etc host. It will automatically work. Nginx will help us to do that. Okay, so what we did, we just put simply here host example.com. So whenever we type in a browser example.com and slash, so it will forward the traffic to this service. If we create one more endpoint here, or एक endpoint create करते हैं, okay, yes, let's say hello, and if we type hello, so we can define here कि कौन से सर्विस के पास ही ट्रैफिक जाना है, v2 बोलते हैं. So it will forward the traffic to v2 service. Okay, so it's very easy with the Nginx. You can define the rules. You can define the rules to which service and which endpoint the traffic should go. Okay, yeah. So we'll stop it here, and that is a, we are going to see the examples as well for a CKD exam. कि आपको questions आते हैं Canary and the Canary deployment, and your rolling update, and also blue green deployment. So doubt clearing session में वो cover करेंगे, and we'll see more examples of this. ठीक है. One doubt, how many deployments we have, that much services we create. Is it right understand? Akash, I didn't get your question. Sorry about that. Oh, you are saying कि हर deployment के लिए हम अलग service बनाते हैं? No, that's not correct understanding. Um, we can also create a one service and redirect traffic to the multiple deployments. कैसे करोगे आप? आपको ये deployment, sorry, हम हमारा लाइव एग्जांपल भी देखते हैं. kubectl get service, ठीक है, nginx v1 बनाए यहाँ पे, nginx v1 -o YAML. तो आप जब सिलेक्टर ऐड करते हो ना, so that selector will define कि आप कौन से deployment को consider करें. So this label should be there in your pod, and it will consider all those pods which has this label. Okay. So there is no need to create a separate service for each of your deployment. If you have some requirement like that, then you can create separate services, but not required. Yeah. Yes, service versus ingress controller. Okay. Ingress controller and service are totally different. मतलब service आप क्यों यूज करते हो? टू ग्रुप पार्ट्स अंडर वन रिसोर्स विच इज सर्विस, एंड सर्विस को एक्सेस करके आपका ट्रैफिक रिडायरेक्ट होगा बिटवीन द अवेलेबल पार्ट्स. करेक्ट. इनग्रेस कंट्रोलर क्या करता है? इट अलाउज यू टू डिफाइन द रूल्स. आप ये देखोगे, जब ये वाला हमने अभी सेटअप किया ना, ingress controller allows you to set up the rules कि between available services आप define करो कि आपका host क्या होगा. You can define the path. If you type hello world.info/,
then it will forward the traffic to one service. Okay, similarly you can create multiple rules in the ingress controller to manage the forwarding traffic to different available services. And also you can set up https. Right now we are accessing our service using http, है ना? So you can set up a https rules as well here. बहुत कुछ देता है ingress controller. Okay. SSL termination, name-based virtual hosting, and the main is load balancing. Load balancing between your services is possible with Ingress. Ingress exposes HTTP and HTTP routes from outside the cluster to service within the cluster. Services हमारे within the cluster है. If you want to expose your services outside cluster, then you can create one resource on top of it available resource, services and ingress will handle it. आप जो बोलोगे कि इस राउट पे क्लिक करने के बाद इस सर्विस को फॉरवर्ड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ तो अमेजोन का एप्लीकेशन, ओके, आप हर कंपोनेंट के लिए आपको पता है कि माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन रहता है, तो कार्ड के लिए एक आप अलग सर्विस बनाओगे, आप फ्रंट एंड के लिए एक अलग सर्विस बनाओगे, एक बैक एंड के लिए अलग सर्विस बनाओगे. ओके, तो आपका यूजर ये कैसे एक्सेस करेगा सर्विस? देयर शुड बी वन मोर एंटिटी ऑन टॉप ऑफ इट या आपके सर्विस एक्सेस करने के लिए. व्हेन यूजर टाइप स्लैश कार्ट, ओके, मतलब amazon.com/cart, so it should forward the traffic to cart service. when user types slash ui, okay, तो उसको ui दिखना चाहिए. when user types slash dv, मतलब ऐसे टाइप नहीं करता, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपका जो ट्रैफिक है इट शुड गो टू द बैकएंड सर्विस. ओके, एंड इट शुड बी सिक्योर एज वेल. ये जो आप amazon.com बना रहे हो तो इट शुड बी सिक्योर, तो आप सर्टिफिकेट एक्सेस सर्टिफिकेट ऐड करना होगा https and then again this traffic forwarding. So it is, you can use ingress controller for that. One more thing is a load balancing between these services. SSL termination हो गया, forwarding traffic to multiple services हो गया, and also the load balancing. It act as a load balancer for your services. Okay. Yeah, Ingress provides the load balancing functionality. Yeah, correct. SSL termination. Okay. यहाँ पे है क्या SSL termination वाला कुछ? TLS. Okay. मतलब आपको second, let me check if we have any good example. Okay. Uh, I don't see any example, but SSL certificate थोड़ा explain करना. If you type HTTP is a unsecure protocol. मतलब वो certificate वगैरह check नहीं करता कि whether your browser is authorized to access that site or not. So we add a certificates HTTPS. आप browser पे click करने के बाद you see it here, your connection is secure because there is a valid certificate is added. And if you click on this site, you see, because it is using a HTTP, so it will check whether you have a valid certificate or whether you are authorized person to access that site or not. So similarly, for your application, you will add a certificate which should be there in a request.
Okay, so to make your site secure, you use a HTTPS. Just an overview. We can't deep dive into HTTPS. If you need more detail, I'll share links for a few of the documents which will actually explain how this HTTPS works. Okay. Yes. TLS. Okay. You can secure an ingress by specifying a secret that contains a TLS private key and a certificate. So for doing your HTTPS, you need to provide the certificate and key that is managed by using a TLS protocol. Okay, so ये secret वाला part हम बाद में देखने वाले हैं, but to secure your site, you can create a secret which will define the TLS cert and the key to secure your site HTTPS बनाने के लिए, and that certificate you can put into your Nginx ingress definition. So here you will define the secret name which has this certificate and key. So आपका ये site now you can access using a HTTPS instead of HTTP. How to confirm that application or service which is in dev staging not move to production without some approval? Wanted to ask for Mike. Um, Confirm application or service which is in dev not move to production without some approval. Yes, so that is where your CI/CD will come into picture. CI/CD में क्या होता है, डेवलपर pushes their changes to the GitHub. वहाँ पे you create a pipeline, entire pipeline आपको create करना पड़ता है. There will be multiple stages. Proper development का testing होगा, image creation होगा, image vulnerability scanning होगा. These all stages will be there in your pipeline, and whenever you are doing any production test or production push, you'll need to test it in staging environment. Once it is available, once it is working in your testing environment, then you can create a you can keep approval process there. मतलब आप you can implement the continuous delivery and the deployment side as well. Once you confirm that your application is working properly in a staging environment, then you can push that into a production environment. So that will come into your CI/CD part, not in this Kubernetes. Okay. It's good to use ingress controller or some kind of load balancer. मतलब it's not necessary. आपको ये कब लगेगा when you have multiple micro service based application. आपका application बहुत बड़ा है and you need to manage these services with single endpoint and you create a routes. जैसे हमने ये Amazon वाला जो देखा था, right? कि आपका सर्विस आपका एप्लीकेशन ही इतना बड़ा है, यू हैव मल्टीपल 100 or 50 डिफरेंट सर्विसेज, एंड इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द लोड बैलेंसर सेपरेटली, आप ingress controller यूज करते हो which will provide you the load balancing functionality, SSL termination, and also you can create different rules to forward the traffic. So when we are
Yeah, Kubernetes, not only Docker, Akash. Kubernetes has started now using a container default engine, container D, and Rocket वगैरह आप use कर सकते हैं. You can use a container region, a different container regions with the Kubernetes now. Yes, but Kubernetes is very helpful for managing your microservice based application. Mm, Dave, can you explain it more? Port 80 or slash 443 in manifest or YAML. So when we are giving access to port 80, that means the front end still not used in production until someone allow it through CSP policy or rule. Yeah. If you are using ingress controller, na, then you will only be able to access your application from outside using a ingress controller rule only. If it is not there, then then your application will not be accessible. So you'll need to define those rules in your services. Uh, ओके ओनली इफ यू आर यूजिंग ए ingress controller तो आपको प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा which endpoint will forward the traffic to which service. And if you are not going to use the ingress controller, then you can directly access it using the service endpoint. Service को access कैसे करते हो वो हमने देखा. You just need to do a curl या फिर from browser. You do the HTTP colon your load balancer URL, or if you are using a node port service, then node IP colon node port, right? तो यहाँ पे कुछ rules वगैरह हम check नहीं कर रहे. You can directly access it. Okay, thank you guys. Thank you for joining. And yes, see you again. Let's see. I'll read those all feedbacks, and if we are really helping you guys, then we'll continue. Um, and we'll see कि और कुछ आपने suggest किया है क्या changes करें. Just let me read those all the feedbacks which are submitted on the Google form. And yeah, we are definitely going to continue this series. जितने भी लोग हो, एक भी बंदा आएगा तो भी हम सिखाने वाले. Just we need some kind of feedback to improve on. That's it. Thank you very much. Thanks to special thanks to Ajay. Last तक. Yeah, thanks. Okay, let me know if you have any questions. I'll wait here for some time. Yeah, about that actual scholarship track. So as we said, we are restructuring the program. Um, we will give away some prizes, but not the CKD vouchers because there we expected a lot of people to join in this series, but not good response. So, and we have limited students now, but definitely we are going to give away something. CKD vouchers, the price is huge, 30,000. We kept that considering the audience है नहीं अभी. But उतना audience है नहीं अभी. But don't worry, no need to get
disappointed, we are going to give something amazing more than CKD vouchers. So tell me honestly, if we skip that part, I hope you're not joining this for a CKD vouchers. If we are not giving us CKD vouchers, will you still continue joining these CKD classes or not? Awesome. We need people like you. बट हाँ डोंट वरी सिकेडे का वाउचर जो रहता है ना दे गिव अवे 50% या फिर 65% ऑफ मिलता है सो आई कीप ऑन अपडेटिंग दोज डिटेल्स इन आवर ग्रुप सिद्धार्थ हाँ हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था स्केड्यूल तो वीक फ्राइडे को हम सेशन रखते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन एट 10 राइट 10 p.m. IST एंड हमारा वीकेंड का सेशन जो रहता है तो 8:30 to 10:30 PM IST रहता है बट ब्लॉग राइटिंग यस प्लीज कीप ऑन कंटिन्यू राइटिंग अ ब्लॉग एक कोई तो था आई थिंक अजय यू आर द वन हु इज राइटिंग द ब्लॉग ऑन लिंक्डइन and it was your first post. You might have seen Ayush. Okay, Ayush. Someone from LinkedIn, and it was his first post where he explained all the Docker commands, and the response he got is amazing because we discussed a lot of things here in detail, and people actually don't know about all these concepts. So if you are preparing for Kubernetes interview and you want recruiters' attention, I'll suggest you to keep on writing the blogs. Uh, बिकॉज वो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी आपको हेल्प होता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू मेक योर प्रोफाइल स्ट्रांगर है ना या सीकेडी असाइनमेंट्स यस वो भी कंटिन्यू करना है विल शेयर दी प्राइजेस अभी जो भी रिस्ट्रक्चरिंग होगा तो नया प्राइजेस क्या होगा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरनली स्कॉलरशिप ट्रैक तो रहेगा बट जस्ट इट इज जस्ट प्राइजेस कुछ अलग होंगे इस बार ओके हाँ गिटहब का लिंक ना गिटहब का लिंक शेयर करता हूँ सीकेडी ये मुझे अपडेट करना है and I need one more help. If you guys are interested to volunteer, please reach out to me because इतने सारे लोग हैं and थोड़ा मैनेज करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है सो इफ देर आर एनी कॉमन क्वेश्चंस which you can answer that would be great and we need some more interaction in a group as well so I'm thinking we will send MCQ or a poll डेली तो सीकेडी का एंड कुबरनेटिस का ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस भी होता रहेगा राइट सो इफ यू हैव एनी सजेशंस और वांट टू डू अ volunteering for this free CKD series just drop me a message on WhatsApp and we will discuss it further okay and thank you very much again I am going to we are going to continue this series for all of you which who are joining these classes regularly and thank you for motivating me again yeah so see you again tomorrow कल का time बताऊंगा I'll just go through the feedbacks again and we'll meet again okay thank you very much have a great weekend enjoy करो stay safe and keep learning okay bye guys